डिवाइन सर्वेंट्स। वैसे लेकिन यहाँ ऐसे रफली पूछूं तो कितनों का मन की इच्छा है कि इसी जन्म में बुद्धा बन जाए? इच्छा तो होगी ना, कोशिश, मतलब क्या बोलते हैं ना, चाहत, बोलो चाहत। चाहत कितने लोगों का नहीं होगा? बताओ, हाथ उठाओ जिनका नहीं होगा। गिवन अ चांस उठा लीजिए, ऐसे सच बोल सकते हैं, बाकी को मत देखिए। ओके, बट एनीवे, so are you understanding the point? So then most of us here have this huge thing कि हम भी बन जाएं ऐसे, है ना? हम इतने महान बन जाएं या इतना वो बन जाएं, और I am already on the path, I am already becoming a Paramahansa, or I am already becoming an Arahant, but you need consistency. क्या है? तो वो consistent चंद ही लोग मिले, तो उसमें एक है मास्टर। Okay, and he did it very consistently at a very young age. Very consistently at a very young age. Between the age of around 13 to 20, most of the possible achievements that we are still trying to tag along had already been done. Okay. Are you understanding the point? Okay, you can call him a Bal Yogi. Yes, and yogi from childhood. Obviously, this has not happened in one birth. ये एक जन्म की बात तो है नहीं, ये कई जन्मों से किया हुआ साधना, उसका आउटपुट है, इट इज द परिणाम। तो हम शुरू तो करें कभी तो, यस, बट द मोर वी कैन मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी, रिपीट, द मोर वी कैन मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी एंड मोर वी बिकम रिलायबल सर्वेंट्स, द मोर आवर जॉब विल बी डन। You have to understand this very important point. You do not have to worry about what you need to get done if you are going to maintain your consistency in energy and frequency. That's all. 2 दिन से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। The rules of nature, the law of karma, the law of nature, put a seed, you will get a tree. This is applicable at the emotional level. पेड़ इमोशनल वर्ल्ड में है, फिजिकल वर्ल्ड में है, एथिक वर्ल्ड में है। If you are going to raise your consciousness to the intuitional world, to the Anandamaya Kosha, and not dip very much, ग्राफ थोड़ा ऐसे ऐसे जा सकता है, ऐसा ऐसा नहीं, है ना? तो डिप ज्यादा ना मारे, थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे चलते रहे, थोड़ा कम चला खुला, थोड़ा बंद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा खुला पूरा बंद, पूरा खुला पूरा बंद, टिमटिमाते हुए ट्यूबलाइट, किसी काम का नहीं। Are you understanding the point? मैंने इतना किया, लेकिन जितने देर खुले थे उतने देर बंद भी थे। So a person who would have become a Buddha or a great person may not in person seem as intelligent as you are. Yes, हो सकता है कुछ इतना इंटेलिजेंट नहीं दिखे वो इंसान, लेकिन कंसिस्टेंसी है। और ऊपर वाले को क्या दिखता है? ग्राफ दिखता है। ग्राफ किस चीज का? कंसिस्टेंसी का। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मेरे बात ये है कि अगर आप 2 दिन मेडिटेशन ना करो तो भी फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट तो रख सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? हमने ये नहीं बोला कि रोज मेडिटेशन करने से ही आप कंसिस्टेंट हो। हमने ये बोला कि 2 दिन मेडिटेशन छूट भी जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं गिरनी चाहिए। The point is not about meditating daily. The point is about maintaining your frequency daily. Hello? Wake up. Yes. The point is not about meditating 10 times a day. The point is about the 10 times a day उस इंसान का है जो हल चला रहा है, तभी तो उसका सफाई होगी। जब हल चला लियो वो इतने बार इतना कुछ निकाल दिए वो गंदगी, तो बस मेंटेनेंस तो करो। Are you understanding the point? The point is about enjoy, watch a movie, sing a beautiful song, live life, stress मत लो, कोई कुछ भी बोलने दो, कान में ना जाने दो या ऊपर से बाउंस मारने दो, है ना?
but you need to maintain the frequency. Okay? ऊपर वाला क्या देखता है? ना आपका शक्ल, ना सूरत, ना कपड़े, ना बाल, कुछ नहीं देखता है, सिर्फ आपका ग्राफ देखता है। हाँ, ऊपर से उसको इतना टाइम नहीं है सब कुछ देखने के। Okay? He sees only the graph. Okay? He sees how much is your ups and downs. If it is kind of maintained, you are a responsible person. You can be taken to the next frequency responsibly. Lucky, you will try to maintain there also. Okay. Then you can be taken responsibly to the next frequency. जब सीढ़ी चढ़ते हो, पौड़ी पौड़ी चढ़ के जाओ, तो आपको एक सीढ़ी पर तो पैर स्थिर रखनी पड़ेगी ना, एक पैर। उस पैर के बल पे आप दूसरे पैर चढ़ा। When you are climbing a stair, you need to first put one foot flat and stable on one step. And once it is stable, resting on that foot, you lift the other foot. That is how you walk. Yes. If there is a problem, if there is a pain, then you need to put both the foot on one stair, stabilize, then put both the foot on the next stair and stabilize. But you need to stabilize, right, before you go into another place. Okay. So, ऊपर से एक ही चीज दिखता है। Is there a stability? बोलो, is there a stability? They are not going to come and check whether you have done 5 meditations or a day, or you have done Adhati Kumilini every day, or what you have done. It could be like Ananda. You heard of the story of Ananda. Ananda was the previous servant of Gautam Buddha. So, Buddha के सेवक थे। तो सब ज्ञान जो बुद्धा को दिया गया सिर्फ ज्ञान रूप में था, कभी अभ्यास नहीं हुआ। There was no practice. There was no practice. So when Buddha passed away, there was a meeting of the Paramahansas. Okay. So in that meeting, they had one place left free for Ananda. So Ananda felt he is not doing justice to that one place which is left free for him. So Ananda just meditated that day night. जो ज्ञान इतने सालों से उनको मिला, उस ज्ञान का एक रात, रातों रात, एक रात के अभ्यास में वो बने परमात्मा। So the number is not the point. Yes, are you understanding the point? Of course, the retreat I have to get you to make you understand this point. तो इसीलिए हम ये कष्ट कराते हैं। लेकिन the point is the number of times is not the point. One time is also enough if the knowledge has been converted into wisdom. अगर जो ज्ञान आपने लिया, उस ज्ञान को आप बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट कर दिए हो, आपके रोजाना जिंदगी में उसको इस्तेमाल कर दिए हो, you have lived all that you are preaching, then just one meditation is going to cause you enlightenment. Hello? Yes? Okay. Because ये हम जब मेडिटेशन करते हैं क्या है? भाई प्रोसेस है। प्रोसेस एक भी बार करो, हो सकता है हो जाए। Are you understanding the point? हम अभी भी इस दुनिया के सिद्धांतों के ऊपर जीवित है। गड्ढा खोदना है तो बहुत मेहनत है। अरे open your crown. Are you understanding the point? Open your crown. वहाँ मेहनत की परिभाषा बदल जाती है। Okay, the term work is defined in a different way when you are going to activate the crown chakra. When you are working from the physical body, service has a different connotation. When I do service, if I pick up somebody, I bathe somebody, if I am going to an orphanage, if I am going to a destitute home, if I am going to an old age home, if I am going to a spastic society, if I am helping the people, that is service at the physical level, very good. Then there is service in the form of psychological counseling, helping out people, giving them a shoulder for them to cry upon. That is service at the emotional level, one level higher, very good. Yes, there could be service in the form of helping a person earn their livelihood so that they don't become dependent on others. Service at a different level. Yes, service का मतलब क्या है? एक इंसान को अपने
एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ना इज लिबरेशन, क्योंकि आप नीचे खड़े थे, अभी नीचे से ऊपर पैर रखना इतना आसान नहीं है। हम सब अपने पैरों में जंजीर लगा के रखते हैं। There are bondages which are known and unknown. Yes, there are bondages from the past which we still like to carry with us. जैसे हाथी को बचपन में जंजीर में बांध के उसको रखते हैं, राइट? बड़ा होने के बाद छोटू से जंजीर तो देख के हाथी डरता है, एक लाख मारे तो जंजीर टूट जाए। Yes, the elephants are chained when they are very young, but when the elephants grow huge, they are many tons in weight. Just one pull from the chain and they are set free. Are you understanding my point? So if you are growing up, if you are becoming more powerful, more stronger, then you are still tied to those same chains that they were when you were younger, when certain rules were put to you because you were going on the wrong path. Now that you have understood the path, first thing is ज़्यादा गिरो मत, दूसरा है खुद को ज़्यादा मत कोसो। क्या? You are not always wrong. Have some good self-esteem. Have some good self-worth. Yes, हमने ये सब किया। आप जो भी बोलोगे बोलो, but हमें मालूम है कि हमने ये सब किया। I am very clear from my side that I am worth what I am. I have the good self-esteem because I know that I have done this. Whether you appreciate it, whether you understand it, whether you want to recognize it, it is not my problem. Are you understanding my point? It is not my problem. ये हिलना कम हो जाएगा। आधे लोग क्यों हिलते हैं? अरे उसने ऐसे बोल दिया। You are constantly looking for self-appreciation. You are constantly looking for others' appreciation. कोई मुझे बोले तो सही, आपने काम अच्छा किया है। आपके दिल और दिमाग से क्या आपने अपना 100% दिया, किसी और को नहीं पूछना। Yes, मैंने अपने दिल और दिमाग से आप लोगों को इतना थकाया है, तो I think we have done it. Okay. Okay, I understand the point. There is absolutely nobody else because you are your own competition. You are your own judge. Only you know whether you have given your 100%. Nobody else is going to be the judge. कोई कुछ भी बोल सकता है बाहर रहते हुए, बाहर से देखते हुए सब कुछ नहीं दिखता है। कितना मेहनत किसी चीज को करने में हुआ है सबको नहीं दिखता है। एक एंगल देखता है, थोड़ा सा जगह देखता है और अपना टिप्पणी दे देता है जब कुछ गलत जाता है। Okay, don't let your self-worth fall. The moment your self-worth falls, your graph falls. Are you getting my point? You have done something, you feel you have done 100%, you have done the meditations, you're right, no problem. Yes, so if you feel you have done 100%, best. बहुत अच्छी बात है, right? अगर लेवल मांगने आ रहे हो तो मेरा टिप्पणी सुनना पड़ेगा, but बाकी जगह ठीक है, so you can just decide for yourself. Okay, are you understanding the point? Okay, so if you have done your best, don't let your graph fall. Yes, sometimes you do the best possibility for showing for pleasing somebody. Let's say कि खाना बना दिया है, घर ठीक कर दिया या कुछ कर दिया। अभी दूसरे की एक्सपेक्टेशन आसमान में है और हमारी क्षमता उस चीज में उतना ही है, तो बस end of the story ना भाई। Are you understanding the point? What you have a capacity for, you have done the whole thing. Whether the other person appreciates or not is their problem. Okay, don't let your graph fall. समझ रहे हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ आ गया? Okay, right? Nobody else is going to come with you. कोई नहीं आने वाला है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद दशरथ बैठे थे स्वर्ग में, ठीक है, सच में रंभा उर्वशी का डांस चल रहा था। ओके ओके, सो श्री राम क्या बोलते वियोग, हाँ वियोग के दर्द में अपने पिताजी से मिलने की इच्छा में ये
प्रार्थना करते हैं कि आखिरी बार मैं अपने पिता से मिल लूं, और पहुंचाया गया श्री राम को वहां पे दरबार में, इंद्र के दरबार में बैठे हैं दशरथ, बिल्कुल युवा अवस्था में, ठीक है। और श्री राम जा रहे हैं और बोलते हैं मैं आपका पुत्र। तो दशरथ बोलते हैं कौन सा पुत्र, कैसा पुत्र? हाँ, ये तो मेटल वर्ल्ड है, स्वर्ग लोग थे, ये जो पुत्र पति पत्नी ये जब थे 60,000 थे ना, उनके याद नहीं आ रहा, बट एनीवे, तो ये सब is only at the physical level. All the connections you are going to take, nothing you are going to take with you. Yeah? You will take it with you if you don't settle it. Well, there is only one way to take it with you. You don't settle it, you will take it with you. And यहाँ पे अगर दूसरा person does not drop and has settled, only one person is not settling, it is that person's problem. Are you understanding what? दो लोग हैं, एक ने सेटल कर दिया अपने दिल और दिमाग में, खत्म कर दिया, दूसरे ने सेटल नहीं किया, उसका भी पता है भाई, वो दोबारा आया, दोबारा बीवी ढूंढे, दोबारा पति ढूंढे, उसका प्रॉब्लम, ठीक है? Are you understanding the point? End of the story. Okay? Okay, is it clear? Yes. So save your souls. Yeah? Okay. Right? Save your souls, because we have this one birth. Let us not allow anybody else to become the reason for our frequencies to fall. Okay? Because ऊपर वाले को कुछ नहीं दिखेगा. जैसे आप हमें एक्सक्यूज बोलते हो, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं ना, जब ऊपर चले जाएंगे एक्सक्यूज समझ ही नहीं आएगा उनको, वो बोलेंगे किसको ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारा ग्राफ गिर गया, तो उसने चिल्लाया तो क्या हो गया, तुम्हारा ग्राफ गिरा ना, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी गिरा ना, उसने चिल्लाया, उसने ये बोला, उसने ये किया, तुमने नहीं किया, कुछ नहीं समझ आने वाला है ऊपर वाले को। They look at the energy level. Hello, good morning. Am I clear? Okay. क्या भगवान को इतना भी नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। दिखता सिर्फ एनर्जी है। क्या समझ गए ना? ओके, सच है ये। वो सब ये फिजिकल वर्ल्ड के पपेट्स को गेम खेलते हुए नहीं देखते हैं, पगला जाएंगे, ठीक है? Are you understanding the point? Okay, so only the frequency can be seen. Repeat. So let's go on to the journey of becoming a superhuman. It is possible only when our frequencies don't drop. Bolo, only when our frequencies don't drop. So, human beings are septenary beings. Bolo, human beings are 7 शरीर है, वैसे 14 शरीर है। कितने शरीर है? 13 या 14, इसमें भी डिबेट है। Anyway, does not matter, एक ऊपर नीचे से। ओके, कुछ 13-14 शरीर है। इसमें से इस शरीर के साथ हम 7 शरीरों या 7 लोकों का भ्रमण कर सकते हैं। 13 या 14 लोक हैं। ओके, I may be wrong. Okay, there are some 13 worlds or so. So out of these worlds, only 7 worlds are possible for you to enter into that frequency using this consciousness that we are presently having, embodied. Okay, so the kingdoms of life. Can you see this? This can also go. Yeah. So the preservation of the form. Can you see this? There's an ape. I don't know. Maybe not an ape. Okay. That is anyway going into a human form. Okay. तो यहाँ देखते हैं mineral kingdom, vegetable kingdom or plant kingdom, animal kingdom, human kingdom and superhuman kingdom. Okay. Now कितने शरीर आम इंसान में जागरूक है, कितने शरीरों में वो काम कर रहा है, फिजिकल, एथरिक, इमोशनल एंड लोअर मेंटल जो मिनरल किंगडम है, इट स्टार्ट्स
with only the physical, etheric, and a 2% activation in the emotional. So this is mineral kingdom. Can you see this? Yeah? This particular triangle is mineral kingdom. It shows complete consciousness of the minerals in the physical, etheric, and very small degree of consciousness in the lower mental. Then we come into the plant kingdom. Plants respond to music. Yes or no? Plants respond to music. Okay? So, emotional kingdom. थोड़ा बहुत मतलब लगभग 20% तक प्लांट्स का जागरूकता इसमें इमोशनल वर्ल्ड में हो गया है. कितना परसेंटेज? 20%. 20% तक इमोशनल वर्ल्ड में जागरूकता हो गया. ओके? एनिमल किंगडम थोड़ा सा और, मे बी अराउंड 40% they are awake in the emotional world, and about 3-4-5% they are awake in the mental world. Okay? The word I am using is awake. जागरूक है. इन दुनियाओं में वो जग जाता है ना? जैसे आप सोते हो तो भी आप जिंदा है, लेकिन आपका शरीर फिजिकल वर्ल्ड में है और इमोशनल मेंटल वर्ल्ड में भी कुछ चल रहा है, लेकिन आप जग जाते हो तो फिजिकल और एथरिक वर्ल्ड में भी काम करते हो. इसी तरीके से जगना. ओके? द जागृत, द फ्रीक्वेंसी इज एक्टिवेटेड for the animal kingdom, around 40% in the emotional world and about 2% in the mental world. In the case of the human being, the activation of, let us say, 5% has started in the higher mental world. Karma Sharir, causal world. Yes, causal world. Connected to the Agya Chakra. इस दुनिया में 5% काम शुरू कर दिया है इंसान ने, या ऐसे ही बोल सकते हैं इस दुनिया के 5% लोगों ने वहां पे काम शुरू किया. आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू पुट इट. यस, इस दुनिया के 5% या 10% लोगों ने कॉजल बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ओके? फिर चलते हैं और उन 10% लोगों में कुछ लोग they can go into that of the superhuman. बोले superhuman. Okay. Now in the case of a superhuman, mental body के ऊपर बुद्धिक लोक, intuitional world, आनंदमय लोक. Yes, इस लोक में जाने के लिए जिस लोक में जाओगे उस लोक का शरीर चाहिए. फिजिकल वर्ल्ड में रहना है, फिजिकल बॉडी चाहिए. इमोशनल वर्ल्ड में जाना है, इमोशनल बॉडी चाहिए. मेंटल वर्ल्ड में जाना है, मेंटल बॉडी चाहिए. आनंदमय लोक में जाना है, आनंदमय कोश चाहिए. ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कोशा? आनंदमय. आनंदमय कोशा. ओके? सो उसके बाद आत्मिक बॉडी. क्या? आत्मिक बॉडी. ओके? सो उसमें इसको निर्वाण लोक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? निर्वाण लोक. ओके? यहाँ पे बिल्कुल शब्दता और स्थिरता रहती है. निर्वाण. ओके? सो निर्वाण लोक में जाने के लिए एक और काया, they are called as the bodies, है ना? तो एक और भी काया या कोशा चाहिए होता है, या जागरूक करना होता है, उस बॉडी को अवेकन करना होता है. राइट? सो इसके ऊपर भी कुछ है, अनुपादका एंड आदि, है ना? अनुपादका एंड आदि. There are 7 planes of existence. बोले? There are 7 planes of existence. The 6th plane is called Anupadaka. It is the existence world of the Paramatmas, and Adi is the existing world of the Lord of the world, Sanat Kumara, and his brothers, the Sanat Sanandas. ठीक है? So these 4 people technically can enter into this loka, the Adi. Right? They enter into this world आदि. उनके नीचे जितने भी परमात्मा है इस दुनिया को चलाने वाले, ये सब लोग अनुपादका. उनका जगह कहाँ है? उनका घर किस लोक में बना
ओके, तो इन दुनिया को बनाने के लिए, बोले इन दुनियाओं को बनाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिवा का तत्व कैसे आता है? हाउ डू यू, where is the intervention of the Brahma, Vishnu and the Shiva energy? Okay, now the third logos, can you see this on the top? The third logos, what is written? Okay, the meaning of the third logos is Brahma, the creator. Okay, creator, जैसे सृष्टि बनना है, क्रिएटर का एनर्जी पहले आएगा और पहले ये सब लोक बनेंगे. All the worlds or all the planes of existence will be created by first outpouring of Brahma, called as the third logos. Okay, पहला काम कौन करेगा? ब्रह्मा करेंगे. Okay, so that is called as the third logos. Then है विष्णु. Second logos is Vishnu. बोलिए, second logos is Vishnu. Vishnu. Okay. So Vishnu comes down and gives life. प्राण शक्ति. क्या है? प्राण शक्ति. प्राण शक्ति comes from the second logos. जैसे ही जीवन शुरू करना है तो विष्णु का काम शुरू हो जाता है. हो गया? Now इसको इतना क्यों समझा रहे हैं? देखिए, last one is first logos. Can you see that? That is Shiva. शिवा तब ही आते हैं, शिव का ऊर्जा तब ही एंटर कर पाता है जब 12th चक्रा इंडिविजुअलाइज होता है. बोलिए, पक्षियों में, पशुओं में, in animals, in the plant kingdom, in the mineral kingdom, there is no separate 12th chakra. Repeat, there is no separate 12th chakra. Okay, only with the beginning of the 12th chakra in human beings, as a little activation has started in the causal world, जैसे 12th chakra बनता है, ऐसे बोल सकते हैं, जब when it is created, only then the energy of Shiva can enter into that form. The energy of Shiva cannot enter into animal kingdom or plant kingdom or into the mineral kingdom. The entry is possible with the creation of the 12th chakra, which starts with the human kingdom. Am I making myself clear? Okay, which starts with the human kingdom. Okay, so there are 14 planes of existence, of which only the first 7 planes will be reached by the human beings, and a person who can reach these even first 5 planes, yes, he is already superhuman. Boliye, he is already superhuman. So Swami Aurobindo ने 5 साल की तपस्या की, जिससे उन्होंने बनाया अपना बॉडी ऑफ द गोल्डन डस्ट. और जैसे जैसे वो लोगों से मिलने लगे, the golden dust was pulled out with each person he was meeting. So he had to go into that meditative state again and replenish the golden dust. He talked heavily about the superhuman kingdom. Okay, and he said then 51% of this world population would enter into the state of the golden dust. The superhuman evolution would have been established. Okay, kitna? 51%. But we are not looking at 51%. We are just looking at the square root of 1% of the world population to be able to activate the infusional body and the atmic body. Kitna? Only square root of 1% of the world population to maintain their frequencies, not allow their self-worth and self-esteem to fall, not allow their graph to fall, and be able to maintain that energy so that they can lift themselves up to the point of superhuman evolution. Okay? So the third logos signifies the divine light, Brahma. Second logos is divine love, Vishnu. And the first logos is divine power, Shiva. So Brahma क्या करते हैं? Physical, etheric, emotional, mental, buddhic
एंड आत्मिक दुनिया को बनाते हैं। ओके, ब्रह्मा क्या बनाते हैं? पहले दुनियाओं को बनाते हैं। एंड दिस pouring down creates the worlds and creates the planes. फिर विष्णु की ऊर्जा आती है और ब्रह्मा ने जो दुनिया बनाया उसमें जीव बनाते हैं। ओके, फॉर्मेशन। The second logos creates 3 kingdoms. How are the mineral, plant, animal kingdom and human kingdom created? First, they start with the creating of the kingdoms which are called as the elementals. The elementals. Okay. The first elemental, second elemental, third elemental kingdom. So elementals are created. So the first elemental kingdom is in the mental world. Evolution होते 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 कई लाखों साल में ये फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम सेकेंड एलिमेंटल बनेगा। फिर जहां फर्स्ट एलिमेंटल था वो नया फर्स्ट एलिमेंटल आएगा। That is wrong. Okay. First, the first elemental kingdom was created. The mental world was created. Many lakhs of years, thousands of years pass by. The first elemental kingdom graduates to become the second elemental kingdom. Then many lakhs of years pass by. The second elemental kingdom becomes the third elemental kingdom. Are you understanding the point? And the first wala second में आ जाएगा. Then the first is replenished. Again, Brahma sends some more first elemental kingdom entities. Okay, it is continuous. The process is continuous. Okay, so this is called as involution. This is called as evolution. Then there is an evolution. पहले first elemental kingdom बनेगा. फर्स्ट एलिमेंटल सेकंड बनेगा, सेकंड थर्ड बनेगा, थर्ड के बाद वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। देन द थर्ड एलिमेंटल किंगडम becomes more refined and goes into the process of evolution. Okay, it goes into the process of evolution. So this is how the kingdoms of life are created. So the first logos, Lord Shiva, when does he come down? When the human consciousness touches the intuitional or at least the causal body. Causal body touch हो गए, intuitional plane को छूने लायक जब हो जाते हैं हम, जब 12th चक्रा थोड़ा सा खुल जाता है, क्राउन चक्रा खुल जाता है, intuitional plane को छूने लायक हो जाते हैं, then the topmost, because it touches the topmost portion of the mental body, at that time the first logos, Lord Shiva, makes an entry into the human mind. Okay, Lord Shiva makes an entry into the human mind. You raise your hands and say, Har Har Mahadev. Yes, so it is almost the position of the 12th chakra. Okay, right? So for receiving the energy of the first logos, Lord Shiva, a person has to be capable of awakening the highest portion of the mental body and almost touch into the intuitional body. Okay? So, शिवजी की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए अपने आप को कैसे ग्रैब सेट करोगे? शिवजी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा। ठीक है? ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? बोलेगा तो है, ठीक है? वहां तक पहुंच गए तो बोलेंगे, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? वहां तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। कैलाश के ऊपर रहते हैं, दैट मींस ही इज एट द topmost point. बोलिए, कैलाश is the representation of the spiritual anatomy of a human being. He is at the topmost point, most hardest to reach. And if you are capable of reaching over there, then all your wishes are fulfilled. Are you understanding my point? If you are capable of reaching over there, then all your wishes are fulfilled. Okay. It is not possible for the Shiva energy to enter into the mineral kingdom, the plant kingdom, or into the animal kingdom, because the Paramatma Shiva, the divine power energy, comes down from the highest portion of the causal body at the lowest portion of the intuitional plane. Okay? And the mineral, animal, and plant kingdom is not awakened in those worlds. When the Paramatma Shiva energy enters into a human being, that person can be now called awakened.
जब शिव की ऊर्जा आपके अंदर ग्रहण होना शुरू हो जाए, आपके अंदर आना शुरू हो जाए, आप सच में जागृत हो गए। Yes, human has been awakened when the energy of Shiva has actually entered into the system. Okay, so the Buddhic body and the Atmic body have already been awakened. Yes, the Buddhic and the Atmic body will also be awakened in the process. So superhuman kingdom, which was shown with wings, है ना? The superhuman kingdom with wings. The wings are a depiction of an open heart chakra. Angels depicted with wings. Yes, the wings, as they are depicted in the superhuman kingdom, is the depiction of a highly activated heart chakra. बोलिए, जब हार्ट चक्रा इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए और स्थिर हो जाए, क्या क्या पॉइंट ऑफ एक्शन है? स्थिर है। जब हार्ट चक्रा बड़ा हो जाए और स्थिर हो जाए, it has stabilized it at a certain huge diameter, then it is depicted in the form of wings. Okay. So a person whose heart is completely open 24/7 and does not shrink for any reason, that is the depiction of a superhuman. Are you understanding the point? कल सुबह तक सुपरह्यूमन बन के जाने का कोई प्लान है? ओके ओके, सुपरह्यूमन बनना बहुत आसान है। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो हार्ट चक्रा खोलो, रखो, बस स्टॉपर लगा दो, फेविक्विक लगा दो, कुछ भी करा लो, रखो। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ओके, so the person is constantly bringing down the energy of the intuitional body into the emotional body. If you want this heart chakra to be big and stable, the meaning is that your crown is so highly activated that constantly ये stopper क्या है? The intuitional energy coming into the heart is the stopper. गिरने नहीं देगा, सोलार के कंट्रोल में आने नहीं देगा, मैग्नेट के कंट्रोल में जाने नहीं देगा। Are you understanding the point? Yes, इंट्यूशनल एनर्जी क्राउन चक्रा से जो आ रहा है, बस लगा के रखेगा कि the door stays open. Okay, are you understanding the point? The person is constantly bringing down the energy of the intuitional body to the emotional body. That person whose consciousness has been completely awakened in the institutional world is capable of bringing down information, responses, ideas, frequencies, and all kinds of suggestions from the intuition and the atmic world, which is very different from the perception of a human being who has only reached the highest portion of the mental world or the cosmic world. जो इंसान अपने मेंटल या हायर मेंटल वर्ल्ड के उच्च पॉइंट तक पहुंच चुका है, उसके दृष्टिकोण दुनिया को देखने का, हालातों का देखने का, और उस इंसान का दृष्टिकोण जो एक छलांग मार के इंट्यूशनल वर्ल्ड में अपना जगह स्थापित कर लिया, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। Are you getting the point? Yes. So एक छलांग मार के जब इंसान इंट्यूशनल वर्ल्ड में अपना गद्दी संभाल लेता है ना, अपना चेयर लगा के बोल देता मैं नहीं पीऊंगा, तो वहां से जो दुनिया दिखेगी, जो दृष्टिकोण होगी, वो बहुत अलग है। ओके, so that person is constantly bringing down the intuitional energy. Persons from the intuitional body and intuitional body brings down information into the physical body. Maybe the physical body is not 100% attuned to the atmic body, but most of the time the heart chakra of a superhuman is mirroring the intuitional body. हो सकता है, बोले हो सकता है एक सुपरह्यूमन दिल से अच्छा है, शरीर से ढीला है, वृक्षासन में खड़े नहीं हो पाएगा मे बी और 1 मिनट। हाँ सर, ओके, सो थोड़ा सा मेहनत है क्योंकि अभी आत्मिक बॉडी शरीर को नहीं कंट्रोल करा है ना, तो बट इंट्यूशनल बॉडी ने हार्ट चक्रा को कंट्रोल किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इंट्यूशनल बॉडी has started controlling the heart chakra
the heart will not drop. Maybe the Atmic body has not yet started controlling the physical body. That is the next level. That is the next level. Physical level में भी वो कर पाए हम जो ऊपर वाला चाहे. हाँ, पहले थोड़ा दिल से, मन से, शब्दों से तो करना शुरू करें. फिर फिजिकल बॉडी में वो करना शुरू करेंगे जो ऊपर वाला चाहे. Yes. So you may start writing a book which has information never ever revealed ever before on this earth. So that is physically you have brought down information. Yes, from the Atmic world, with the high activation of the intuitional body and the causal body, and equal development of the physical, emotional, and the mental body, you are capable of bringing down, writing a protocol, writing a healing method, which has never ever been utilized ever before on this earth. किसी भी किताब में जितना भी ढूंढ लो वैसे कुछ मिलेगा ही नहीं. That is the Atmic body controlling the physical body. Okay? Right? Our nervous system is separated. Okay, so that was about that, the superhuman. Anyway. Next, we come to the nervous system. So, becoming superhuman का part है nervous system. Okay, anatomy. So, the nervous system divided principally into two. The sympathetic and the cerebrospinal. So involuntary and voluntary system. The involuntary system or the ganglionic network. The cerebrospinal or the voluntary system consisting of the brain and the spinal cord. Without the nervous system, a human being is simply a mass of multiplying protoplasm. Yes, nervous system है जो हमें पूरे दुनिया से अलग करता है. Yes, otherwise you are just like a single cell amoeba multiplying colony. Okay, so you be simply a mass of multiplying protoplasm, incapable of sight, sound, motion, feeling, mind. It is through the nervous system that we are all transformed from the plant to the human. हम लोग nervous system के कारण अलग हैं. हम पेड़ नहीं है कि एक बीज डालो तो 100 फल ही आएंगे. हम नर्वस सिस्टम से बने ह्यूमन बीइंग्स हैं. थोड़ा और आगे सोच सकते हो. Yes, the beginning rules are important. As long as you don't know what we are, the moment you know what you are capable of, you can think even higher. So the two nervous systems relate to the soul growth, spiritual unfoldment and ultimate liberation from the earth's limitation. ये दो nervous system मिलके हमारा उद्धार कर सकते हैं. The liberation from this human condition is possible by the upgradation of this nervous system. So the sympathetic nervous system manifests as a series of fibers or ganglia connected together as two cords or threads extending from the skull to the base of the spine. The cords begin in the brain, the opening of each nostril, somewhere around here, and the two cords have three concentrated centers of activity down the spinal area. One is the heart area, the plexus of nerves, called as the Ananda Khanda, and one is the solar plexus area, the plexus. The word plexus means combination of nerves. Okay? So another is the solar plexus. It is basically the kalpa through which the wish-fulfilling tree, repeat, the wish-fulfilling tree. And one more plexus at the pelvic area or the Kundalini Khanda, where all the cords converge and meet. So, in our body, the sympathetic nervous system has many plexus, matlab combination of nerve cells. So here, the picture is not exactly clear, but can you see this? This is one plexus. Can you see this? Gucha. But there is one here. Okay. So there are technically two plexus. हाँ, देखने में एक पेड़ जैसे लगता है, वृक्ष जैसे लगता है.
In human form, the sympathetic system appeared first. जब इंसान बना तो पहले कौन सा नर्वस सिस्टम आया? Sympathetic nervous system. Its earlier manifestation was faint currents of desire, which assumed a definite pattern in the human form. Sympathetic nervous system का पहले ये काम था कि it was a point of transmission for desires. Cerebrospinal nervous system evolved much later, enabling a human to adjust to the outer world through the 5 senses. So, cerebrospinal nervous system, brain and spinal cord evolved much later in the human evolution. उसका मकसद है sensory organs के साथ जुड़ के काम करना, the 5 senses. The sympathetic system, which is the same in each individual, it is the cerebrospinal system, which is the seat of one's expression as a human being. Sympathetic system किसी इंसान में कुछ अलग नहीं होता है, ऑलमोस्ट एक ही तरीके से काम करता है. Cerebrospinal system के द्वारा हम अपने इंद्रियों के द्वारा एक्सप्रेशन करते हैं. क्या करते हैं? एक्सप्रेशन. We express to the outer world through the cerebrospinal system. It is negative feminine in polarity. What is it? Negative feminine in polarity. Now let's understand this word. Negative feminine in polarity and positive masculine in polarity. Okay, there is a yin and a yang. Bole? Yin and a yang. Okay. Anybody who receives is yin and anybody who gives is yang. Anybody who receives is negative in polarity. Anybody who gives is positive in polarity. Okay? So if you say Krishna and the gopis were receivers, so they were shown in the feminine form. They were of negative polarity as receivers, and Krishna was shown in the masculine form because it was positive polarity as a giver. Okay? So the polarity here means yin yang, ida pinya, स्त्री पुरुष का मतलब जेंडर से नहीं, it is the giver and the receiver. Okay. The lord of the brain. So negative feminine in polarity is the which system? Sympathetic? Yes, the sympathetic nervous system. And the cerebrospinal nervous system is positive masculine in polarity. It expresses, it gives. The lord of the brain is the pineal gland. Clearly understand? The king, the lord, raja, pineal gland. ठीक है? राजा कौन है? Okay, ठीक है. Surrounded by the 12 disciples or the 12 convolutions of the brain. ब्रेन में जो 12 डिप्रेशंस है या कन्वर्जन्स है, so they are called as the 12 disciples. The lord or king for all his potential can perform no activity whatever without the influence of the feminine gland, the pituitary. रानी कौन है? Pituitary gland. राजा कौन है? Pineal gland. Okay? So the pineal gland is having no power to do anything unless the pituitary gland actually sends some energy or hormones to be able to activate the pineal gland. Okay. सब जागरूक है? Yes, ma'am. Okay. 12 nerves coming from the central portion of the crown. कितने nerves? 12. 12 nerves. 12 nerves coming from the central portion of the crown. 12 inner petals of the crown chakra are connected to these 12 nerves. Right? आपके 12 nerves, physical body में जो nerves है, जो 12 petal के साथ connected है. Okay? Heart chakra has 12 petals.
The 12th chakra has 12 petals. Then we have the 12 cranial nerves, 12 months, 12 zodiac signs. 12 is a very, very, very important number. In the Christian tradition, they talk about Jesus Christ and the 12 disciples. 12 disciples are representations of the 12 petals of the heart chakra or the 12 cranial nerves. Okay, बीच में राजा बैठा हुआ है, pineal gland, उसके आसपास जो 12 convulsions of the brain है, so that is the 12 disciples. ये समझ आ रहा है? Yes, ma'am. They're like depressions, convulsions. Okay, right, but there are 12 cranial nerves also, I guess I'm right. Okay, 12 cranial nerves also in those depressions which go. They are corresponding to the petals of the crown chakra. Okay. So, the Lord or the King cannot do any activity without the influence of the feminine or the pituitary gland. Each month, each full moon activates one cranial nerve. Hello? Each month, each full moon activates one cranial nerve. मतलब each month, each full moon, one petal is activated. Repeat. Each full moon, each one petal is activated. One petal is activated. Okay? Not for you people, for starting beginning, है ना? आप कहीं full moon देख चुके हो ना? More or less. Okay? ठीक है. थोड़ा बहुत activate हो जाना चाहिए ना अभी तक. Okay? Now can you see this? Cerebrospinal fluid. बोलिए? Cerebrospinal fluid. Inside the central nervous system, there is a flow of fluid which is called as the cerebrospinal fluid. बोलिए? There is a flow of fluid which is called as the cerebrospinal fluid. Okay. The two main components of the brain is cerebrum in the middle and cerebellum in the end. Okay? Cerebellum in the end. The cerebrum is the upper brain, lies like a skull cap over the entire top of the head. It is connected to the pineal gland. Cerebrum जो ऊपर वाला portion है, उसके साथ pineal gland connected है. Cerebellum is at the base of the spine, connected with the pituitary gland. यहाँ basal chakra से हम activate करते हैं ना pituitary gland को, तो वो जगह is the cerebellum. Of the 7 ventricles or caves in the brain, the most important at this present human evolutionary status is the third cave which lies in the midbrain. The third cave in the middle portion of the brain, ये था ना midbrain, the front middle portion, है ना, around the cerebrum portion. So, in that portion lies the third ventricle. क्या बोलेंगे? Third ventricle. Third ventricle. और third ventricle के अंदर क्या है? Pineal gland. Okay, that's the midbrain. Inside that is the pineal gland. So, it is the temple of the Most High, the seat of the soul. इस शरीर में आत्मा को ढूंढना है तो एक दो जगह है. एक है द प्लेक्सस इन द हार्ट, जिसके अंदर फिजिकल परमानेंट सीध है. ठीक है, कई सारे जगहों पे इसी का जिक्र किया जाता है, लेकिन द शिव पुराण दे टॉक अबाउट द फ्लेम ऑफ द हार्ट. वैसे शिव पुराण में ये इसके बारे में आई डोंट थिंक उतना जिक्र किया जाता है, ओनली एज द अजना चक्र, बट नॉट एज द पिनियल ग्लैंड. ओके, तो अक्सर किसका जिक्र किया जाता है? द प्लेक्सस Ananda Khanda. Okay. So, of the 7 ventricles of the caves in the brain, the most important is now the third. This is called